government efforts for literacy. Why literacy is our concern? Literacy is very effective and important parameter of measuring social development of a country. Literacy is also the ground reason for many other social problems such as crime rate, political unawareness, and terrorism. Education in Pakistan is overseen by the Federal Ministry of Education and the provincial governments. Article 25A of Constitution of Pakistan obligates the state to provide free and compulsory quality education to children of the age group 5 to 16 years. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such a manner as may be determined by law. According to Article 37B of the Constitution of Pakistan, the state shall be responsible for eradicating of illiteracy and provision of free and compulsory education up to secondary level within minimum possible time. Education has become a privilege rather than a right. The Millennium Development Goal, MGDs जिसको हम कहते हैं, were adopted in 2000 by government to make global progress on poverty, on education, health, hunger, and the environment. The Millennium Development Goal was expired at the end of 2015. The Millennium Development Goal targets come from the Millennium Declaration signed by 189 countries, including 147 head of the state and government in September 2000. The MDGs have officially ended in 2015, but MDGs acceleration framework will continue till 2018. Pakistan has committed to all the international declaration to extend the agenda of providing the basic right of education to all of its citizens. उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के एंड के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 25 to 27 सितंबर 2015 में लॉन्च किए गए. The member state of the United Nations converged in New York for the United Nations UN Summit on Sustainable Development and adopted the new global goals for sustainable development that are called SDGs. The world leaders pledged their commitment to the new 2030 Agenda for Sustainable Development, encompassing 17 universal and transformative sustainable development goal. तो जब जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे उसमें 8 गोल थे, तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेक्स्ट 15 साल के लिए कमिटमेंट की गई तमाम ममालिक के लीडर्स के दरमियान, तो वो 17 गोल थे. उन गोल्स में मज़ीद उसमें इजाफा किया गया. 6 EFA गोल टू बी अचीव्ड बाय 2015. ECCE expanding early childhood care and education, UPE universal primary education, free and compulsory primary education for all, continuing education, learning and life skill program for young and adults, literacy, 50% increase in literacy rates, gender elimination, gender disparities in primary and secondary education by 2005, and gender equality in education by 2015, quality, improving quality of education, literacy initiatives provide quality learning opportunities to all illiterate and out of school population in Pakistan through non-formal means in compliance with the United Nations mandate under Sustainable Development Goal SDG 4
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 4 है, उसमें ये कमिटमेंट हमने की है टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। इसका मिशन क्या था? डेवलप लिटरेट लर्नड एंड prosperous Punjab through elimination of literacy and provision of learning opportunity. Provincial level agencies and initiative on literacy, on education, उसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसको स्ट्रेंथन, उसको डेवलप किया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, Punjab Education Foundation, Basic Education and Community Schools, Literacy and Life Skills, Literacy with Technical Skills, NCHD, National Commission on Human Development. तो ये सारे वो इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ले रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. The National Literacy Program (NLP) is an integrated literacy program which particularly target out-of-school children, young people, and adult women. This is currently being implemented across the entire nation, that is covering the country's 122 districts and effectively operating in about 50,000 villages. तो NLP क्या करता है जी? NLP improving the literacy level of parents or family members is regarded as an essential instrument in ensuring access to education for children and young people. तो NLP के जो सब डिवाइडेड 3 ब्रॉड कंपोनेंट हैं, उनमें यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन UPE, अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम ALP और पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम, ये 3 उसके बेसिक कंपोनेंट थे. यूपीई प्रोग्राम क्या था? यूपीई प्रोग्राम प्राइमरी टारगेट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड यंग पीपल है, टू असिस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू गेन एक्सेस टू एजुकेशन बाय सेटिंग अप फीडर स्कूल इन एरियाज विद नो गवर्नमेंट स्कूल. जिन एरियाज में गवर्नमेंट के स्कूलों की अवेलेबिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, वहाँ पे फीडर स्कूल का इनकाद किया गया है ताकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उन एरियाज़ के वो उन स्कूलों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें. फिर सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंक्रीज द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, वो सोशल मोबिलाइजेशन की गई, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, पेरेंट्स को एजुकेट किया गया. तो ये सारी जो चीज़ें थी, द प्रोग्राम इन्वॉल्व्स द कंप्लीकेशन ऑफ अ डाटाबेस ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थ्रू door-to-door survey, which are conducted by community volunteer and district education department. Through social or community mobilization to encourage families to enroll their children in schools, either government school, non-formal basic education schools, feeder schools. The NCHD has also opened formal community-based primary schools in remote areas. नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्होंने भी बहुत सारे जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें स्कूलों का इनकाद किया. सिमिलरली मोर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टीचर्स एंड टीचर लर्निंग मटेरियल्स हैव बीन मेड अवेलेबल टू द स्कूल्स, कैटर फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोलिंग इन द प्राइमरी एजुकेशन. तो वहाँ पे जो इनके डेवलप किए हुए स्कूल हैं, वहाँ पे जो टीचिंग मटेरियल है, यूनिफॉर्म है, किताबें हैं, पेंसिलें हैं, वो तक गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं. फिर अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम जिसको ALP कहते हैं, तो इज अ बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम विच एंडेवर्स टू प्रोवाइड बेसिक लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू यंग पीपल एंड अडल्ट, मोस्टली विमेन. तो ये ख़वातीन के लिए जो स्कूलों का ज़्यादातर जो किया गया वो उनकी थी 11 से 45 साल के दरमियान जो ख़वातीन हैं, जिनको जो इलिटरेट ख़वातीन हैं, उनके लिए ALP प्रोग्राम का आगाज़ किया गया. मोस्ट ऑफ द टारगेटेड बेनिफिशरीज हैव नेवर अटेंडेड स्कूल और ड्रॉप्ड आउट स्कूल बिफोर रिक्वायरिंग बेसिक लिटरेसी स्किल ड्यू टू सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हाईलाइटेड.
बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जो थे, ज़्यादातर बेनिफिशरीज वो थे जो ड्रॉप आउट थे और उन्होंने नहीं किया हुआ था. द NCHD target is to enroll about 1 million learner into the ALP per year, most of whom are women. जो ALP अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम है उसमें NCHD ज़्यादातर फोकस विमेन को कर रही है. तो ये कुछ गवर्नमेंट की एफर्ट्स थी जो लिटरेसी पे हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक सिंगल एजेंडा पे काम कर रहे हैं, एक सिंगल एजेंडा पे फोकस्ड हैं कि हमने अपने मुल्क का लिटरेसी लेवल हाई करना है, अपने मुल्क के सिटीजन्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान.